Ladies and gentlemen, today as the Prime Minister hailed our COVID warriors when India achieved the 1 billion vaccine feat and gave credit where it was legitimately due, his critics and the opposition continued to sulk. While some Congress Neta chose to remain cynical, those who were the Prime Minister's staunch critics when the vaccine drive was launched, be it Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra or Sharad Pawar, continued to maintain a stoic silence. They proved today that all they saw in this momentous and monumental achievement of India from the prism of politics. Listen in to why even the world lauds India's model, these netas still believe it to be propaganda. कह रही है कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है। ये बताए कि आपने डबल डोज कितने लोगों को लगा दी। दूसरी बात, जन कल्याण योजनाएं हैं, ये जनता के पैसे से होती हैं, ये जनता के टैक्स से ये योजनाएं पूरी की जाती हैं, तो जनता के पैसे पे सरकार क्यों बावई लूट रही है? बहुत सारे लोगों ने गुमराह करने का काम भी किया, कईयों ने तो वैक्सीन नहीं भी लगाई होगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता भी फैलाई, लोगों को प्रेरित भी किया और हिंदुस्तान की जनता ने आगे आकर 100 करोड़ वैक्सीन लगवाई है। सरकार इसको माने या ना माने सरकार की बात है, लेकिन ये सरकार की खुद अपना बयान है कि 216 करोड़ डोजेज की जरूरत है। कि सरकार ढिढोरा पीटने के बजाय काम करे और हिंदुस्तान के आम लोगों को हर बात में चुनाव की शिकार न बनाए। जहां इनकी हाईकमांड इशारा करे वहां के लिए ट्वीट करना, वहां के लिए मीडिया में बाइट देना, लेकिन हाईकमांड को भी और राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की उनको भी कम से कम वहां तो ध्यान देना चाहिए जहां इनकी खुद की सरकार है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां अंदरूनी लड़ाई हो रही है और उस अंदरूनी लड़ाई का जो नुकसान है वो जनता को चुकाना पड़ रहा है। Well, that's really what the opposition has to say, and these were the same people who were back when the vaccine drive was launched and doubted silence of the COVID warriors and blamed the Prime Minister for allegedly mishandling and misleading Indians. And today, when science has proved itself, they still continue to make this all about politics. So the legitimate question is, isn't Rajniti undermining the nation's resolve? That's the question and the debate. Bharat pride of billion. That's the big question and the debate on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. And joining me tonight, Dr. Sambit Patra, National Spokesperson of the BJP, Ghanshyam Tiwari, National Spokesperson of the Samajwadi Party. But my first question goes to Gajendra Singh Sankla, leader of the Congress Party. और सांकला साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 100 करोड़, मैं मानती हूँ कि हमारा जो लड़ाई है, हमारी जो वॉर है, वो अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन 1 बिलियन पीपल वैक्सीनेटेड एक बड़ा कीर्तिमान है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस पर तो कम से कम 2 अच्छे लफ्ज बोल सकते हैं, कोई मनाही तो नहीं है, कोई बैन भी नहीं है देश में। बिल्कुल बैन नहीं है और बिल्कुल बोलने चाहिए, इसमें भी कोई बात नहीं है। और मैंने तो आज 2-3 चैनल पर पहले भी डिबेट किया और मैंने ये बात कही भी है, प्रभावी तरीके से रखी भी है कि देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता और लीडर्स जिस तरह की दुष्प्रचार 7.5 साल से कर रहे हैं कि देश के अंदर 65 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है पूरे देश के अंदर आज मेडिकल एंड हेल्थ के संबंध में, वो सारे स्टाफ ने मिलकर के इस बात को दिखाया है, चाहे वो हेल्थ वर्कर है, डॉक्टर्स है, हमारे नर्सिंग स्टाफ है और दूसरे मोटिवेशनल लोग हैं और सोशल वर्कर्स हैं जिन्होंने लोगों को मोटिवेट भी किया है, उसमें सभी पार्टियों के लोग भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उन्होंने सबने मिलकर के इस बात को रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो। कांग्रेस पार्टी के कितने लोगों को, कांग्रेस पार्टी के कितने लोगों ने लोगों को उत्साहित किया या उनको बताया? क्योंकि आज तो कांग्रेस पार्टी ने कहा ये तो ढोंग है, ढकोसला है, और पहले समाजवादी पार्टी कहती थी ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, लगाना नहीं चाहिए। तो कांग्रेस से किसी ने कुछ योगदान दिया? अगर कांग्रेस का योगदान नहीं होता, आप ये बात मानिए
मैं राजस्थान की बात करूं, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहाँ पर पंजाब के अंदर है, आज भारी संख्या के अंदर वैक्सीनेशन हुआ है। हमारी सरकार के अंदर बड़े बड़े स्लोगन के माध्यम से जगह जगह कैंप लगाए गए, जगह जगह शिविर लगाए गए, लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट किया गया। और सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि देश का प्रधानमंत्री ने तो हाथ खड़े कर दिए, मैं वैक्सीन फ्री देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के तमाम लोगों को वैक्सीन फ्री देने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। तो पूरी पहली घोषणा इसके अंदर अशोक गहलोत साहब ने की। और जैसे ही ये के द्वारा अपोजिशन के द्वारा दबाव पड़ा, तब जाकर के केंद्र की सरकार ने घुटने टेके और वैक्सीनेशन के लिए राजी हुए। अगर ये वैक्सीनेशन केंद्र की सरकार निःशुल्क नहीं करती और राज्य सरकारों को व्यवस्था करनी पड़ती, तो आप समझिए कि इसके अंदर ये पैरामीटर्स को चुनना बड़ा मुश्किल काम था। सही चीज इनको बताई गई, इनके ऊपर दबाव डाला गया। आप देखिए सब जगह आंदोलन हुए और उसके बाद इस सरकार को आखिर मानना पड़ा कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था हम करेंगे। जब टैक्स आप ले रहे हो, आज ये चीजें आज इंसान की मूलभूत जरूरतों के अंदर जुड़ी हुई है, उसकी जान की चिंता है। आज किस तरह से लोग ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर की कमी से, दवाइयों की कमी से, एम्बुलेंस की कमी से, हॉस्पिटलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इतने लोगों ने अपनी जान दी है। किस तरह से लाशों को तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के सौजन्य से है। डॉक्टर पात्रा, आपने तो टाइम ही वेस्ट किया। सारा कांग्रेस के सौजन्य, सारा कांग्रेस के सौजन्य से है, साल के अंदर इस कांग्रेस, इसीलिए ढोंग बुलाया, आज इसको ढकोसला बुलाया सुरजेवाला साहब ने। जवाब दीजिए सांखला साहब को। Navika, today is not a day of a debate. Today is a day of, in fact, comprehending how huge we have achieved and what a resolve we have fulfilled. This is not a small feat. And Navika, we three spokespersons over here, we must all have heard what three doyens in their respective fields, Dr. Trihan, Dr. Sangeeta Reddy, and in fact, Dr. Guleria had to say about a couple of minutes ago when they were talking to you. They're extremely knowledgeous people, they're experts in their respective field, and I was listening to them, awestruck, because they were so to the point. They said that this is victory of India, this is victory of every doctor, this is victory of the scientific community. There was no rural divide, there was no urban divide. I mean, just imagine a country which is said to be less resourceful than the developed countries of the world, a country which in fact was projected as if it would not be able to complete this task. It would take 12 long years to complete this task. A country for which in fact the leading newspapers of the world wrote that probably India would not be able to maintain the transportation cold chain in order to keep the vaccines alive. That country has achieved something which is adorable, and in fact the world is congratulating us. Navika, this is victory of India. This is my victory, this is Mr. Sankla's victory, this is Mr. GST's Ghanshyam Tiwari's victory, and well, yes, I should congratulate Rahul Gandhi also. After all, Mr. Rahul Gandhi is also an Indian, so it is his victory also, since it's India's victory. This is no tutu meme time. This is to feel proud as Indians, and well, yes, we are still not out of woods. We have to fight together. We have to see to it that India wins this battle. And remember, I mean, look at America, only 41 crore vaccination. Look at India, 100 crore vaccination. What is the timeline? We were the first one, in fact, to complete vaccination this magnitude within a span of 9 months, just 9 months. And imagine, Navika, had we not become Atmanirbhar, had we not had these two indigenously manufactured vaccine, Covaxin and Covishield, manufactured in India, man, where would India be standing today? Would we have vaccinated even 1/10 of people that we have vaccinated today? It's not just the mechanism of vaccination. It is from day one itself where we had a vision that we have to manufacture, we have to have indigenous vaccine. The first DNA vaccine comes from India. Look at the CoWIN app. I mean, look at the granularity of the CoWIN app, a huge app which has contributed hugely. These are not small things, Navika, and for God's sake, let's not have a tutu meme over this. Let me congratulate Ghanshyam Tiwari and Mr. Sankla. दोनों खुश रहिए और दोनों थोड़ा मुस्कुराकर कहिए कि हाँ, हम सब मिलकर इस देश के पूरे वैक्सीनेशन में मदद करेंगे एक दूसरे की. Ghanshyam Tiwari, have we come a long way from questioning the BJP vaccine till 1 billion vaccinations? And looking back, do you think we should stop thinking like this and actually come together as a nation, because अकेले कोई नहीं लड़ सकता, सबका साथ चाहिए होता है.
Good evening, Navika ji, to you, the viewers, as well as my co-panelists. It is good that Sambit spoke for everybody and said that it's a moment to celebrate for the country. Definitely 100 crore vaccinations puts India at the global stage and demonstrates the strength of our immunization process that has developed over decades from Pulse Polio Abhiyan all the way to this campaign. And I think that once we look back on the 278 days that this has taken, and the commitment that Government of India has given to the Supreme Court to vaccinate everybody with both the doses by end of year, I think there is some distance to go. And the BJP government has shown that if on Prime Minister's birthday they could do 2 crore vaccinations, there is no reason why they would not meet their commitment. As far as what Sambit was talking about and how everybody has contributed, with the health workers, those at the front line, with the doctors, with the scientists, and even civil society, we have set up something called immunize.in. We are looking at vaccine equity and vaccine hesitancy, especially among women. The COVID data shows that 6% fewer women have gotten vaccinated. The COVID data today has tremendous health records with respect to how vaccine hesitancy and vaccine equity differs from pocket to pocket in India, and what is the real rural-urban and technology divide is. So all that can be used by state governments as well as central government to strengthen the public health system. As far as saying that the Prime Minister himself did it and every vaccine certificate has Prime Minister's pictures, I think we have, and I have criticized enough about the self-congratulatory nature and excessive ability to publicize one's work of this government. But today is not that day. Today, let's feel stronger that we have achieved the mark of 100 crore vaccines. Well, vaccine hesitancy has to be fought, and do we think that we can fight this together? Because one dose, many people have taken, 75% of the adult population has taken, but there is still a second dose, and then there are the children. So do you think, Ghanshyam Tiwari, political parties can work together with the government to get rid of the vaccination hesitancy and get people together to get their vaccinations? Well, clearly, if you look at how under Prime Minister Modi, the parties and states had to fight among themselves every day, even when India was facing the worst of second wave. I do not think that Prime Minister Modi has any interest as well as ability to bring parties together or chief ministers together. The DB comment is not तो आप खुद ही कर सकते हैं, आप खुद ही कर सकते हैं, आपको तो लोगों को कन्विंस करना है, उससे प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना, आप लोगों को कन्विंस करिए. You're saying about political parties, but I have tremendous faith in the ability of public health workers in India, the ability of civil society and individual entrepreneurship and initiatives to be able to create health communication campaigns such that those who have taken the first dose take the second dose, such that vaccine hesitancy doesn't come up in children should we face third wave. It is great for the country that we are not facing the third wave. Dr. Patra wants to respond to you. Dr. Patra, आप कुछ कहना चाह रहे? As I said, no tutu meme, but there are a few important issues because vaccine hesitancy has cropped up in this debate. And remember, it's good that Ghanshyam Tiwari and others want to do away with the vaccine hesitancy, but we as politicians have contributed a great deal towards this hesitancy. The famous dialogue, if we would know of one politician saying that ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, मैं तो इसे नहीं लगाऊंगा, हमारी सरकार आएगी तो हम अपनी वैक्सीन लगाएंगे. From there to one very important point which has cropped up in today's debate, in fact, across most of the channels. Thankfully, we don't have Anurag Bhadoria of Samajwadi Party over here, but since you ran his bites, I would like to ask a question. Mr. Bhadoria has claimed in all the channels that the Samajwadi Party Karyakartas will not get vaccinated. They have not got vaccinated, and Mr. Akhilesh Yadav has not got a single dose of either of the vaccine, Covaxin, Covishield, or in fact Sputnik either, because they believe that they will get vaccinated at the end. So at least I would like to know from my good friend Mr. Sankla as well as from GST that though we are participating in this debate, have we got vaccinated, and why this hesitancy in part of Samajwadi Party as declared by their office bearer, national spokesperson Anurag Bhadoria, that they will not get vaccinated? You want to respond to that? Well, I can say that I have been doubly vaccinated and with proper procedure, and I think
most people in the country, independent of their political standing, have gotten vaccinated, and most people are doing their bit to ensure that vaccine hesitancy as well as vaccine equity, especially with respect to women, does not build in our country. We have the ability to use data to present the best public health models that other countries, especially the developing world, can use, and the model that we have in India can be used across the world. As far as what a spokesperson of the party has said, I think that the data about who's gotten vaccinated or not gotten vaccinated is available. I don't think that there is a party line that says that Samajwadi Party workers will not get vaccinated. Akhilesh Yadav ji has said in the interview with Times Now as well that he would want to ensure that everyone in Uttar Pradesh gets vaccinated, and then he would want to be in line for the vaccine, and the party will contribute their best to ensure that people in the state get vaccinated. सांकला साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं, क्या राजनीतिक दलों का कर्तव्य नहीं है कि इसके आगे की लड़ाई में कम से कम हम साथ लड़ें, वैक्सीन हेजिटेंसी खत्म करें, दूसरा डोज लगाने के लिए लोगों को एनकरेज करें, और कम से कम हेल्थ और वैक्सीनेशन और कोविड फाइट बैक के एक इशू पर हम सब साथ आगे का सफर तय करें? नाविका जी, आपका बिल्कुल सवाल सही है और ये होना भी चाहिए और ये हो भी रहा है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लोगों को ये बात नजर नहीं आ रही है। वो हर बात को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस समय पॉलिटिकल इश्यूज खड़े हुए, कई बातें खड़ी हुई, कई बातें उभर करके आई, उसमें कुछ अपोजिशन के लोगों को भी क्लियर नहीं था, कुछ जो रूलिंग पार्टी है वो भी उसको स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। ऐसे एजिटेशन थे जिनकी वजह से कई बातें उठी है और वो बातें भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं उठनी चाहिए, इस बात को भी मैं मानता हूं। लेकिन आप इस बात को देखिए कि वैक्सीनेशन जैसा प्रोग्राम को भी आज पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आज निश्चित रूप से सरकार ने आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, 30 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीन लगी है, डबल डोज, और डबल डोज लगने के बाद आदमी निश्चित रूप से सेफ होता है और 50% के आसपास सिंगल वैक्सीन से भी सेफ होता है। डॉक्टर्स और ये टेक्निकल लोग इस बात को बताते हैं। तो इस बात को करने के लिए प्रधानमंत्री जी को या इनको जाकर के पब्लिकली ये शो करना लोगों को कि भाई हमने ये काम कर दिया और विरोधियों ने इसका खूब विरोध किया। सुबह से मैं चैनल पर देख रहा हूं इसी बात को लेकर के कोस रहे, जबकि उनको करना ये चाहिए, हमने 100 करोड़ का आंकड़ा सब लोगों के सहयोग से लिया है और हम चाहते हैं कि आगे भी सब लोगों का इसके अंदर सहयोग मिलना चाहिए। जो कमियां और गलतियां रही है उसको छोड़ करके हम आगे बढ़े। आपके सामने बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा ने यहां तक ये बात कह दी कि साहब ये है सर, दूसरे चैनल पे क्या हुआ उसकी बात क्यों दोहराएं, उसकी बात क्यों दोहराएं? पर डॉक्टर पात्रा यहां बैठे हैं, वो जवाब देंगे। डॉक्टर पात्रा, See, in fact, I've heard most of the leaders speak today. I heard our respected Prime Minister giving out a speech on this issue. He never, in fact, pointed a finger to any other political party. He congratulated the doctors, the healthcare workers, those who maintained the cold chain, and in fact, the public of India at large. I heard Mr. Nadda, the president of Bharatiya Janata Party, he too did not point a finger towards any political party. But it was the Congress party which held a press conference today. Why Mr. Randeep Surjewala, who said, I mean, all kind of things against the Prime Minister and as far as 100 crore vaccination is concerned. He did not accept, in fact, that the country has gone a large way in contributing towards, in fact, fulfilling the resolve of our nation. So it is you who held a press conference. We did not hold a press conference against you. And secondly, and very importantly, let me tell you, in this very country, I mean, we had politicians about a couple of months ago, they were saying that we have been treated as guinea pigs. Remember Anand Sharma, Shashi Tharoor, they used the word guinea pigs. When in fact we had the emergency usage. बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर पात्रा, लेकिन we are at a milestone. 1 billion people vaccinated. Let's today at least resolve that in respect of all those health workers and COVID warriors who have been standing on the front line. At least now, we, the people of India, and we, the political parties of India, will not politicize the issue of healthcare, especially the COVID fight back in this country. And let's all be proud
And let's put out those visuals of celebrations, those visuals of monuments being lit up, because 1 billion people is a lot. And if we can beat countries like Australia, Russia, United States, and all of them put together, then clearly India has come a long way. The fight's not over. We all have to do our bit by being careful. But it's a huge moment. And yes, we did it. And we will continue to do it. That's the spirit. And that's the idea of India. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me on the News Hour. Good night. I'll see you tomorrow.